Hello, the student of classes. Today we will read about the letter. There are two types of letter. First, formal letter. And second, informal letter. इन हिंदी इसे हम कहते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और इसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। In the formal letters, we write the official letters. It contains official letter. It contains official letter. ये और it contains personal letter. इसमें इन द फॉर्मल लेटर बिजनेस, कंप्लेंट, and application. In the second one, informal letters, relatives and friends. Next, it's come how to write a letter. You have written it, pause the video and write in your notebook. Next, first off, how to write a letter? Here is sender's address. After that, in a 3 lines, no more than date as October 13, 2020 or 13 October 2020. After that, from to whom the letter concern, जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं उसको, यहाँ इसका एड्रेस लिविंग द लाइन and near about 3 lines. After addressing, salutation, sir,
or madam, as you want. After that, subject. You have to write subject. You can write up, above or below the subject. Next, the body of the letter. Body of the letter 2 or 3 paragraphs. Formal letters always written in a brief, briefly. Formal letters always written in a briefly, और ये जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं ये संक्षेप में लिखे जाते हैं, मैटर इनका शामिल होता है। और एट लास्ट में जो हम कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हैं उस पर लिख देते हैं योर्स, ओनली योर्स। बट all the address start with the left side, both formal and informal letters. जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी लेफ्ट साइड में ही लिखी जाएंगे, वो आइदर सेंडर्स एड्रेस हो, डेट हो, फ्रॉम रिसीवर्स एड्रेस हो, होम टू राइट द लेटर, वो सर और मैडम, सैल्यूटेशन आर एड्रेसिंग, सब्जेक्ट, बॉडी और योर्स, both sir. Informal letters and formal letters. Here is only sender's address. Sender's address. Two or three lines. Now date. Same pattern. October 13, 2020 or 13 October 2020. Okay? But there is no need to write subject or receiver's address or home to write the letters. यहाँ उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं। And there is no need of the subject. यहाँ विषय भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ रहा ना? यानी जहाँ हम पर्सनल लेटर्स की बात करते हैं, रिलेटिव्स की बात करते हैं, फ्रेंड्स की बात करते हैं, तो जरूरत नहीं है उसके एड्रेस लिखा जाए जिसके लिए लिखते हैं। और ना तो सब्जेक्ट लिखने की बात है, हाँ एड्रेसिंग या सैल्यूटेशन जरूर लिखते हैं, उसके लिए हम लिख देते हैं डियर मदर, डियर फादर, डियर फ्रेंड, है ना। और अगर छोटे होते हैं तो उन्हें लवली लिख देते हैं। और फिर इसके बाद में बॉडी आता है। ये क्या होता है? इसमें डिटेल्स में बताते हैं और इसमें ब्रीफ में, संक्षेप में कहते हैं, इसे डिटेल में बताते हैं। आपको 2, 3 या 4 पैराग्राफ में लिखते हैं और फिर लिख देते हैं योर लवली, योर अफेक्शनेट, as you want, as your affectionate, your lovely, ओके ठीक। अब आप इसको ऐसे पैटर्न अपनी कॉपी में बनाओगे। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। Now the example is, question, write a letter to your father telling him about your recent visit to a historical place, highlighting the main attraction of the place. You are Aman/Anita of Capital Public School, Jankipuram, JKP, short form of Jankipuram. Now start the letter. Capital Public School,
Jankipuram, Lucknow, date 13 October 2020. My dear father, let me share my recent experience with you. Last week, our class went for a visit to the Taj Mahal. Our class teacher was with us. For most of us, was our first visit to the famous historical place. However, we had heard about it a lot. Change the prices. Naturally, our expectations were very high. At first glance only, we found it beautiful. I stood for some time near the water pond, admiring the reflection of the main building in the clear water. Change the prices. Then we went in about the main structure. There was a guide with us who told us about the architecture of the Taj Mahal. He told us about the four minarets. He told us about the flowers engraved on the walls. This knowledge was quite interesting and revealing. Change the passage. We will talk out in more detail when I come to see you during the holidays. And now, complimentary close with addressing our salutation. Addressing to yours affectionately, Aman/Anita. Student of classes, homework for you. Write a letter to your sister telling her about your birthday which you had celebrated last day. You are Naresh/Neera of Capital Public School, Jankipuram, Lucknow.